Hello students and welcome to today's class. So in the previous class we have already discussed about the four different divisions of plant kingdom. Today we'll be discussing about the last division of plant kingdom, that is the angiosperms. So while discussing about gymnosperms, I have already mentioned कि they have certain similar properties to that of angiosperms. तो उनका कुछ property होता है जो इनके साथ similar होता है, angiosperm के साथ similar होता है. But angiosperms, commonly known as flowering plants, ये सबसे advanced plants होते हैं in the total plant kingdom, and they are very much specialized in the mode of sexual reproduction. Okay, तो आज हम लोग discuss करेंगे about this specific group which is called as angiosperms. So students, let's begin. So the first point here is, as I have been telling you, कि they are commonly referred to as the flowering plants. इनको flowering plants बोला जाता है because they bear beautiful flowers which have different colors, they have fragrance, they also possess nectar. Some of the flowers might not be very fragrant enough, but yes, they do possess these kind of different structures. So in the angiosperms, pollen grains and ovule develop in specialized structures called flowers. So this structure that we are saying, pollen grains, which are the male gametes, and ovules, which actually contain the female gamete, egg cell, develop into in specialized structures called as flowers. तो इनका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है फ्लावर होता है जिसके अंदर ओवेरी होता है और उस ओवेरी के अंदर ओव्यूल होगा. द ओव्यूल विल कंटेन द फीमेल गैमेट. एट द सेम टाइम द फ्लावर आल्सो बियर्स एंथर which will contain the male gamete which is the pollen grains. ये दोनों flowers में ही होते हैं. So this is an example of it. As you can see, hibiscus. Now ये hibiscus क्या होता है, इसमें दोनों होता है. आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जिसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है जिसको पिस्टिल बोलते हैं. दैट विल डिस्कस इन द लेटर हाफ ऑफ दिस चैप्टर. But remember, yes, they will contain both the male and female reproductive part within these structures called as flowers. Okay, so that is an identifying feature of this specific group. Now here the seeds are enclosed by fruits. In angiosperms, the seed which are formed, they will have a covering of fruit, because इनका जो ovule होता है, ovule which develops into seed actually will be covered by surrounding ovary. तो after fertilization क्या होता है, ovule develops into seed and the ovary will develop into fruit. So there will be fruit present here. Okay, this was not seen in case of gymnosperms. Gymnosperms का naked seed होता था, उनका भी फर्टिलाइजेशन होता था, उनका भी ओव्यूल सीड में डेवलप करता था, लेकिन उसके सीड के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होता था. देयर वाज नो सच कवरिंग, बट दिस प्लांट्स डू पोजेस. नाउ दे आर फाउंड इन ए वेरी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि ये लोग सबसे इवॉल्व्ड प्लांट स्पीसीज में से आते हैं, प्लांट ग्रुप में से आते हैं. तो ये क्या है कि दुनिया में बहुत जगह पे मिलता है इन डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स कंडीशंस, स्टार्टिंग फ्रॉम रेन फॉरेस्ट टू डेजर्ट इकोसिस्टम्स टू हिली टेरेन टू स्वाम्पी लैंड्स. आपको ये हर जगह पे मिल जाएंगे. सो दे आर हैविंग ए वेरी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. एंड रिमेंबर, दिस आर दी रिसेंट प्लांट्स टू हैव इवॉल्व्ड. सबसे न्यू प्लांट्स हैं ये. ओके okay? इनका इवोल्यूशन सम अराउंड 100 मिलियन ईयर्स बैक ही हुआ है. नाउ इनका रेंज इतना डाइवर्स होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है दैट इज वुल्फिया. The smallest angiospermic or flowering plant is Wolffia, whereas the tallest angiosperm can be Eucalyptus, which can be hundreds of feet tall. ठीक है, तो Wolffia बहुत छोटा होता है. It is very tiny. So just see how it looks like. This is Wolffia. You can see at the tip of your finger many such plants will come. तो ये जो individual dots आप लोग देख रहे हो, each of them is one plant. So imagine how small this Wolffia is, the smallest angiosperm. In comparison to that, you have the largest angiosperms which are the eucalyptus trees. So this you might have seen. ये तो हमारे locality में भी मिल जाएगा आपको. Eucalyptus trees, इनका bark जो होता है generally whitish होता है. They develop a grey bark, but the bark will fall off and it will have an whitish appearance. इसके leaves जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, elongated leaves होते हैं. They are slightly poisonous and they have a menthol like smell. अगर इनके leaves को आप लोग हाथ से squeeze करेंगे तो एक menthol like smell आता है. So that is the uniqueness of this specific plant, which is called as eucalyptus, which is the largest or the tallest of the angiosperms. Okay. Now the next property is they provide us with food, fodder, fuel, medicines and commercial products.
तो इन द मॉडर्न टाइम्स यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर प्लांट डिराइव्ड। हम जितना भी प्रोडक्ट यूज करते हैं आइदर एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर प्लांट डिराइव्ड। और जो भी प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट होते हैं मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली फ्रॉम द एंजियोस्पर्म्स। तो फूड की तरह तो यूज करते ही हैं। वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। बिसाइड दैट फूडर, फूडर मतलब इट इज यूज्ड एज फूड फॉर कैटल्स। हम लोग कैटल्स जैसे काउस, गोट्स, शीप, बफेलो, इनको खिलाने के लिए भी ये प्लांट्स यूज करते हैं। एंड दे आर ग्रोन फॉर दैट पर्पस ऑल्सो। बिसाइड्स दैट इसको फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है। द वुड ऑफ दिस प्लांट्स इज यूज्ड फॉर बर्निंग। एंड यू विल फाइंड सर्टेन प्लांट्स लाइक जत्रोपा, दे हैव सर्टेन ऑयल विच इज यूज्ड एज फ्यूल, जिसको हम लोग बायोडीजल भी बोलते हैं। सो बायोडीजल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जट्रोपा एंड दैट इज ए फ्यूल। तो फ्लावरिंग प्लांट से हमें फ्यूल भी मिल जाता है। मेडिसिन, ऑल ऑफ यू नो कि हमारे बहुत एंशियंट टाइम से, फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स ओनली वी आर यूजिंग दिस फ्लावरिंग प्लांट्स एज मेडिसिन। मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए, देयर इज ए ब्रांच दैट इज आयुर्वेदा। आयुर्वेदा completely deals with the flowering plants used as medicine, different parts of them, कभी root, कभी stem, कभी flowers, कभी leaves. So that is medicinal purpose भी होता है। besides that commercial purpose में भी use करते हैं। So this is how it is used in ancient medicines for making different oils, different ointments, different kinds of medicinal products, as well as commercial products के लिए भी use करते हैं। ठीक है। Now they are divided basically into major two classes। ये major two class में divide कर जाते हैं। एक होता है monocotyledon and the other one is dicotyledon। The word mono means single। So these plants will just have one cotyledon, एक ही cotyledon होगा। Very common example, all the different kind of rice, wheat, barley, maize, all these plants आप लोग देखोगे इनका seed जो होता है उसमें सिर्फ एक ही cotyledon होता है। It will not be divided into two folds। ठीक है। But there are plants which are called as dicotyledonous plants or dicots। Di means two। सो ये सारे आपके पल्स वेराइटी के प्लांट्स जितने भी होते हैं, पल्सेस, दाल वेराइटी जो आप लोग बोलते हो, तो उनको अगर आप लोग देखोगे यू विल ओपन अप, यू विल फाइंड कि उसमें दो लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो सेगमेंट्स होते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज एक्चुअली कॉटिलीडन्स। ओके। एंड दे स्टोर द फूड फॉर द जर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ ए सीड। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कॉटिलीडन्स जो होते हैं, अगर दो कॉटिलीडन्स हैं तो उसको डाइकॉट बोलेंगे, अगर एक ही कॉटिलीडन है तो उसको मोनोकॉट प्लांट बोलेंगे। सो लेट अस सी हाउ दे आर एक्चुअली। The monocotyledons have only one cotyledon in their seed, whereas the dicotyledons are characterized by having two cotyledons in their seed। ठीक है। तो अगर सीड में एक ही कॉटिलीडन है तो मोनोकॉटिलीडन, सीड में अगर दो कॉटिलीडन्स हैं तो डाइकॉट। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। Many people confuse that the cotyledons themselves are the seed. No, it is not true। cotyledons are just a part of the seed। The whole cotyledon is not the seed actually। तो यहाँ पे डायग्राम में देख के समझने की कोशिश करते हैं। So here you have two different ones। नीचे जो आपका दिया है corn, that is a monocot। ये एक ही सीड है, देखो इसका कोई डिवीजन नहीं है। There are no two flap like structures, only one seed। तो ये जो टोटल सीड है इसमें एक ही कॉटिलीडन होता है और उसका आउटर कवरिंग होता है which is fruit tissue, then they have a seed coat, then they have endosperm which is the storage for food, then there is one cotyledon। यहाँ पे देखो आप, इसका एक ही cotyledon है ना, this is the cotyledon, this is the segment। okay। तो the total seed has different structures, cotyledon is a part of the seed। ठीक है। तो अगर एक ही cotyledon होता है तो मोनोकॉट। सिमिलरली अगर आप लोग डाइकॉट सीड में देखोगे, जैसे यहाँ पे बीन दिया हुआ है, तो इन बीन ऑल्सो यूल फाइंड टू कॉटिलीडन्स। नाउ दिस टू कॉटिलीडन्स, बीच में उसका एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगा, उसमें फिर एम्ब्रियोनिक लीव्स होंगे, एम्ब्रियोनिक रूट डेवलप करेगा, एम्ब्रियोनिक शूट पार्ट होगा, सीड कोट होगा। तो ये सब मिला के सीड होता है। लेकिन जो दो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कॉटिलीडन्स बोला जाता है। तो एज बिकॉज दे आर हैविंग टू कॉटिलीडन्स दे आर कॉल्ड एज डाइकॉट। एंड इन केस ऑफ कॉर्न, मेज, बार्ली, व्हीट, राइस, इनका सिर्फ एक ही कॉटिलीडन होता है, इसलिए उनको बोला जाता है मोनोकॉट प्लांट्स। ओके। So these are the general characteristics of the flowering plants called as angiosperms। So in the next class, we'll be moving on to their reproductive properties, and we'll see how reproduction takes place, sexual reproduction takes place in this kind of plants। Okay. Thank you everyone।